हाथ में निकलने देंगे तो ये जल्दी पक जाती है। देखिए गल चुकी है, आलू भी हो गए हैं। बस अब ये 2 या फिर 3 मिनट में हो जाएगी। इतने मेरी चाय रेडी हो गई है। अब हम बनाते हैं पराठे। तो देखिए कितना बड़ा कलर आया। मैंने आपके सामने कोई मसाले नहीं डाले, कुछ नहीं डाले इसके अंदर। ये देख सकते हैं कोई सब्जी हो गई रेडी। और ऊपर से गार्निश के लिए हम डालेंगे इसमें है धनिया, क्योंकि मैंने पहले इसे वॉशर किया था ना, काट के रखा। जैसे हम डाल के गैस का फ्लो कर दिया बंद। और कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।